Grandara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we will read from the book Ocean of Mercy about Srila Prabhupada. तो आज हम पुस्तक से पढ़ेंगे ओशन ऑफ मर्सी जो प्रभुपाद जी के द्वारा रचित है. This book was written by His Holiness Bhakti Charu Swami. ये जो पुस्तक है ये भक्ति चारू स्वामी महाराज के द्वारा लिखी गई थी. So this book is describing how Srila Prabhupada was in Vrindavan in 1977. तो ये पुस्तक बताती है कि किस प्रकार प्रभुपाद जी 1972 में वृंदावन में रहे थे. Atreya Rishi looked up at Srila Prabhupada, his eyes shining with appreciation. अत्रेय ऋषि प्रभुपाद जी के जैसे दिखते हैं, उनकी आंखें क्या है, चमकती हैं. He said, Srila Prabhupada, you are the perfect example. वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी आप एक परफेक्ट उदाहरण हैं. You have made impossible possible by your devotion. आपने impossible को भी possible कर दिया है. And Krishna's potency acted through you. और भगवान की शक्ति आपके द्वारा कार्य कर रही है. That's why you have achieved an impossible miracle. इसीलिए आपने क्या है एक ऐसे चमत्कार को प्राप्त कर लिया है जो बिल्कुल भी असंभव था. Srila Prabhupada has replied. प्रभुपाद जी उसका रिप्लाई करते हैं. A devotee simply want to serve Krishna. एक जो भक्त है केवल भगवान को ही सर्व करना, भगवान का ही सेवा करना चाहता है. For the pleasure of Krishna. उनकी प्रसन्नता के लिए. He desires to do something for Krishna. वो कुछ भगवान के लिए करना चाहता है. And Krishna fulfills his desire. और भगवान उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं. In this way, devotee becomes empowered by Krishna. और इस प्रकार जो भक्त होते हैं भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं. This is how Krishna spreads Krishna consciousness. इस प्रकार भगवान कृष्ण भावनामृत को फैलाते हैं. In this world. इस संसार में. He does not act himself. वो खुद कार्य नहीं करते हैं. But acts through his devotees. लेकिन अपने भक्तों के द्वारा कार्य करते हैं. By empowering them. उनको शक्ति प्रदान करने के द्वारा. Therefore, इसलिए whenever we see some remarkable achievement, इसलिए जब भी हम कोई अद्भुत सफलताएं देखते हैं in Krishna consciousness, कृष्ण भावनामृत में, we have to understand हमें समझना चाहिए that it's happening through the devotees. ये जो भी हो रहा है भक्तों के द्वारा हो रहा है. Because they have been empowered by Krishna. क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा शक्ति प्रदत्त है. So Atreya Rishi gave report on preaching in Iran. तो अत्रेय ऋषि जो थे उन्होंने प्रीचिंग का रिपोर्ट दिया था जो ईरान में हो रहा था. He was working for American company Arthur Young. वो अमेरिकन एक कंपनी थी आर्थर यंग, उसके लिए काम कर रहे थे. But now he resigned from his job. लेकिन अब उन्होंने उस जॉब से रिजाइन कर दिया था. And started his own business. और उन्होंने अपना एक व्यवसाय प्रारंभ किया. In order to have time to preach. ताकि उनके पास समय हो प्रचार करने के लिए.
And his company has become so successful और उनकी कंपनी जो थी वो बहुत सफल हो चुकी थी that he did not have any time for preaching. और उसके लिए कोई टाइम उनके पास कोई टाइम नहीं था प्रचार के लिए. Hearing that, Srila Prabhupada laughed प्रभुपाद जी ये सुनकर हंसने लगे and said, और कहा that means you are making more money now. इसका मतलब आप अधिक धन कमा रहे हैं आप. Atreya Rishi admitted that this was true. अत्रेय ऋषि ने इसको स्वीकार किया कि यह सच था. Srila Prabhupada said, then use this money in Krishna's service. प्रभुपाद जी ने कहा इस धन को आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल कीजिए. Atreya Rishi also gave report on Pakistan, अत्रेय ऋषि ने पाकिस्तान का भी रिपोर्ट दिया, which also was his preaching zone. वो भी उनका ही प्रचार का एक स्थान था. A Hindu lady एक हिंदू स्त्री that had married a Muslim governor उन्होंने एक मुसलमान गवर्नर से शादी कर ली थी. was taking great interest in promoting Krishna consciousness. वो बहुत उत्सुक थी कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए. And her husband was supporting her. और उनके जो पति थे वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे. Srila Prabhupada has asked, are there many Hindus in Pakistan? प्रभुपाद जी ने पूछा क्या वहाँ पाकिस्तान में बहुत हिंदू हैं? Atreya Rishi confirmed, yes. अत्रेय ऋषि ने बताया हाँ जी. But they faced great difficulties. लेकिन उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. And many they are living there because they don't have any place to go. कई वहाँ पर रह रहे थे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई स्थान नहीं था जाने के लिए. Still, as they became aware of Krishna consciousness, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भावना के बारे में जागरूक हुए. so they saw a glimpse of hope तो उन्होंने एक आशा की किरण देखी and responded favorably. और एक फेवरेबली उन्होंने उसका क्या किया स्वीकार किया. And Srila Prabhupada got the greatest joy और प्रभुपाद जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए when he heard about book distribution growing. जब उन्होंने बढ़ते पुस्तक वितरण के बारे में सुना. Back to Godhead was printed recently in the Iranian language. Back to Godhead magazine Iranian language में प्रिंट हो चुका था. And the Persian translation of the Bhagavad Gita was almost complete. और पर्शियन लैंग्वेज में भगवद गीता लगभग कंप्लीट हो चुका था. And would be printed in 3 months. और 3 महीने के अंदर अंदर प्रिंट होने वाला था. So devotees everywhere were informed. तो सभी जगह सारे भक्त इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी. That Srila Prabhupada had told कि प्रभुपाद जी ने बताया that news about book distribution gave him life. वो जो समाचार मिला बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रंथ वितरण का उससे वो उनको एक मानो एक जीवन मिल गया. This inspired them even more. इस सभी ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया. And amazing news started to come और अच्छे समाचार आने लगे from all around the world. पूरे विश्व से. In just 1 week, केवल एक सप्ताह में the London Temple has distributed a record 70,000 books. लंदन के मंदिर ने 70,000 ग्रंथों का वितरण कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया. And the more books devotees distributed, अधिक से अधिक ये पुस्तक वितरण होने लगे भक्तों द्वारा. the more Prabhupada, who was staying in the bed, प्रभुपाद जी जो क्या है प्रसन्न होने लगे जो खड़े थे. he pushed to print more books. उन्होंने अधिक से अधिक ग्रंथों का प्रिंटिंग करने के लिए बोला. Srila Prabhupada said, don't keep money in the bank. प्रभुपाद जी ने बोला इस धन को बैंक में मत रखिए, Just print books. केवल ग्रंथों को प्रिंट कीजिए. That is the best investment. ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा. That is the best way to multiply your money.
ये सबसे अच्छा तरीका होगा अपनी इनकम को डबल करने का। One of the most successful book distributors एक प्रसिद्ध बुक डिस्ट्रीब्यूटर ग्रंथ वितरक in the whole world पूरे संसार में was Ganashyam Das. घनश्याम दास थे Then he became Bhakti Tirtha Swami, और वो बाद में भक्ति तीर्थ महाराज बने, who was risking his life जो अपने जीवन को खतरे में and was distributing Krishna consciousness in the East Europe. खतरे में डालकर ईस्टर्न यूरोप में प्रचार कर रहे थे। Wherever he went, जहाँ भी वो गए his dark skin was attracting great attention. उनकी जो उनका सांवलापन था, गहरा जो ज्यादा डार्क कलर था, वो क्या है सभी लोगों को आकर्षित कर रहा था। In some places they never saw person with dark skin. कई स्थानों पर लोगों ने इस प्रकार का काला व्यक्ति नहीं देखा था। Although he went into the communist countries हालांकि वो कम्युनिस्ट देशों में गए, and he could be arrested वो गिरफ्तार हो सकते थे, and he could be put into the prison. वो जेल में भी डाले जा सकते थे। Once KGB agents were following him एक बार केजीबी के जो एजेंट थे वो उनका पीछा कर रहे थे in the university building, विश्वविद्यालय की बिल्डिंग के, and he ran through the corridor और वो भागे कॉरिडोर की तरफ and ran into the professor's office. और प्रोफेसर के कमरे ऑफिस में घुसे, And he told the professor that he had an appointment. और उन्होंने प्रोफेसर को कहा कि उनके पास एक अपॉइंटमेंट है। And professor said that he knew nothing about appointment, प्रोफेसर ने कहा कि वो कुछ नहीं जानते थे इस अपॉइंटमेंट के बारे में, but invited Ganashyam to sit down. लेकिन घनश्याम को बोला कि आप बैठ जाइए। A moment later, 2 agents of KGB rushed in, कुछ क्षण बाद 2 केजीबी के एजेंट वहां पर आए, but after speaking with professor, लेकिन प्रोफेसर के साथ बात करने के बाद they left. वो चले गए। And once the professor had listened Ganashyam, और जब प्रोफेसर ने घनश्याम को सुना, he ordered full set of Srila Prabhupada's books. उन्होंने प्रभुपाद के ग्रंथों को पूरा एक सेट ऑर्डर कर दिया। So Srila Prabhupada would wait eagerly for the news from Ganashyam. तो प्रभुपाद जी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे घनश्याम की तरफ से कोई समाचार के लिए, And he was extremely pleased with him. और वो बहुत प्रसन्न थे उनसे, And he was hearing with big emotions his reports. और प्रभुपाद जी बहुत बड़े भाव से उनकी रिपोर्ट को सुन रहे थे। Srila Prabhupada said, this boy goes without sleep sometimes for 3-4 days. प्रभुपाद जी कहने लगे कि यह लड़का कभी-कभार 3-4 दिन तक सोता नहीं है। He is going from one city to another to distribute books. वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए। He is a real spiritual warrior. ये एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा हैं। When Ganashyam has written to Srila Prabhupada how time and again he had become aware that Krishna was helping him, जब एक बार घनश्याम ने बताया कि कैसे बार-बार भगवान उनका मदद कर रहे हैं, and he was overcoming all the difficulties, और वो सभी कठिनाइयों का सामना कर पा रहे थे। Srila Prabhupada commented प्रभुपाद जी ने कहा that Ganashyam's success in face of many challenges, कि घनश्याम का सफलता या बहुत सारे कठिनाइयों का सामना, including his bodily features, उनके जो शारीरिक अवस्था थी, his inability to speak local languages, और वो क्या है जो लोकल भाषाएं थी उनको भी बोल पाने में समर्थ थे, and government opposition, और जो गवर्नमेंट का अपोजिशन, and the threat of arrest, और उनके चेतावनी, उनको गिरफ्तार करने की चेतावनी,
was perfect demonstration of his dedication to spiritual master. इसलिए उनके क्या है एक अच्छा एक उच्च स्तर का क्या था एग्जाम उदाहरण था उनके समर्पण का. And the wonderful reciprocation one would receive from Krishna in devotional service. और बहुत सुंदर आदान प्रदान उन्होंने प्राप्त किया प्रभुपाद जी के द्वारा. So, as Srila Prabhupada received uplifting news about book distribution from all around the world, जैसे प्रभुपाद जी ने पूरे संसार से एक बहुत अच्छा खबर सुना ग्रंथ वितरण का, he started to recover वो धीरे-धीरे ठीक होने लगे and his appetite increased. और उनका पाचन भी ठीक होने लगा. So he sent Bhakticharan Maharaj to Ayurvedic doctor. तो उन्होंने भक्तिचार्य महाराज को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भेजा. Srila Prabhupada had a friend, प्रभुपाद जी के एक मित्र थे Ayurvedic doctor, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर in Gopinath Bazar in Vrindavan. गोपीनाथ बाजार वृंदावन में. So Bhakticharan Maharaj went there भक्तिचार्य महाराज वहाँ गए and he found this Vanamali Kaviraj. और उन्होंने देखा वनमाली कविराज को. He was sitting in the chair वो एक कुर्सी पर बैठे हुए थे behind wooden table. एक लकड़ी की टेबल के पीछे. And Bhakticharan Maharaj explained him that Srila Prabhupada is very sick and he needs treatment. उन्होंने बताया भक्तिचार्य महाराज ने बताया कि प्रभुपाद जी क्या है बहुत बीमार है और उनको क्या है इलाज की जरूरत है. But this doctor was 85 years old. बट ये जो डॉक्टर थे ये 85 वर्ष के थे. And he said, I am not even walking around. क्या मैं घूम भी नहीं पाता हूँ. But Bhakticharan Maharaj arranged a rickshaw to bring महाराज ने एक रिक्शे की व्यवस्था कराई him to Krishna Balaram Mandir. उनको कृष्ण बलराम मंदिर तक पहुंचाने के लिए. So the doctor took this austerity to go. तो डॉक्टर ने इस प्रकार की तपस्या की वहां तक जाने के लिए. And he came to Srila Prabhupada's room. और प्रभुपाद जी के रूम में आए. He took his pulse. और उन्होंने उनकी नब्ज चेक करी. And he said, yes, there is a disorder of the doshas. और उन्होंने बताया कि आपके जो दोष हैं वो क्या है संतुलित नहीं है. But I know very nice medicine. लेकिन मैं जानता हूँ कि अच्छी. He took Bhakticharan Maharaj to the field. और उन्होंने भक्तिचार्य महाराज को बाहर गार्डन में लाए. And he was showing him different herbs. और वो उनको दिखा रहे थे अलग-अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ. So he collected these herbs. उन्होंने उनको कलेक्ट किया. And he shown to him how to cut them, how to mix and make medicine. उन्होंने उनको बताया कैसे कट करना है, कैसे काटना है और कैसे उनको मिश्रित करना है और दवाई बनाना है. And he said, every morning you should go to the field to collect fresh herbs and you should make this medicine. उन्होंने बताया आपको प्रति सुबह आपको क्या है जाना है और ये सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके दवाई बनाना है. And tomorrow I will come to check if it's working. और कल मैं आऊँगा और देखूँगा अगर ये काम कर रहा है. So next day doctor came and the medicine was working. Srila Prabhupada's health was improving. दूसरे दिन डॉक्टर आए और उन्होंने देखा कि जो दवाई थी वो काम कर रही थी और प्रभुपाद जी की स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा था. So before that Srila Prabhupada was fasting few weeks. उससे पहले प्रभुपाद जी कुछ सप्ताह के लिए क्या है व्रत पे रखे व्रत था. But after he started to take this medicine, लेकिन जब से उन्होंने उस दवाई को लेना आरंभ किया, and because he has received so many wonderful news about book distribution, उन्होंने ग्रंथ वितरण के बारे में बहुत सुंदर समाचार सुन लिए थे. so his health was coming up, उनकी जो उनका स्वास्थ्य था वो बेहतर हो रहा था. and he started to eat. और तब उन्होंने खाना प्रारंभ किया. And one day he got a smell from Diti kitchen. एक दिन उनको क्या है एक खुशबू आने लगी डीडी किचन से. They were making samosas समोसा बना रहे थे or pakoras. और पकोड़ा. So he sent Bhakticharan Maharaj, check who is doing the cooking. उन्होंने भक्तिचार्य महाराज को भेजा देखने के लिए कौन वहाँ पर खाना बना रहा, प्रसाद बना रहा. And ask him, can he cook some samosas for me? और पूछा उनसे कि क्या वो कुछ समोसे मेरे लिए बना सकते हैं.
So Bhakti Maharaj went to the deity kitchen भक्ति चारू महाराज डीटी किचन में गए and he saw Vibhu Chaitanya Prabhu. और उन्होंने विभु चैतन्य प्रभु को देखा। For many years he was chief cook in deity kitchen. कई वर्षों तक वो क्या है चीफ कुक थे डीटी किचन में। He is the only one person to whom Srila Prabhupada said that you don't have to chant on the beats. वही एक केवल एकमात्र व्यक्ति थे जिनके लिए प्रभुपाद जी ने बोला था कि आपको 16 माला पे नहीं करना है। Because he was cooking for 12 hours every day. क्योंकि वो प्रतिदिन 12 घंटे के लिए खाना बनाते थे। And he was singing Hare Krishna for 12 hours. और वो क्या है पूरे 12 घंटे के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का चिंतन करते थे। So Srila Prabhupada said, you don't have to chant on the beats. इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा आपको क्या है माला पे जाप करने की जरूरत नहीं है। He was only one person to whom Srila Prabhupada said this. वही केवल एकमात्र व्यक्ति थे जिसे प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। A very special person. बहुत मुख्य विशेष व्यक्ति थे। I saw him maybe 20 years ago. मैंने उनको देखा था 20 साल पहले। He was very old. बहुत वृद्ध थे। And he was distributing Charinamrita. He was sitting there in Krishna Balaram Mandir and distributing Charinamrita. Till the end of his life, he was doing service. And he left the body. His samadhi is in Goshala. So Srila Prabhupada asked him to cook samosas for him. And he was so happy to do some personal service for his spiritual master. Then Bhakti Maharaj put these samosas on the plate. And he went out of the kitchen. And Tamal Krishna Maharaj was going. So he said, where do you go with these samosas? He said, I am bringing them to Srila Prabhupada. And Tamal Krishna Maharaj said, are you crazy? If Srila Prabhupada will take these samosas, he will die. क्या आप पागल हो गए प्रभुपाद क्या है एक समोसा खाएंगे तो क्या है सब मर जाएंगे। So Bhakti Maharaj said, I don't know. Srila Prabhupada said to me to bring. I cannot do. Bhakti Maharaj ने कहा प्रभुपाद जी ने मुझे कहा लाने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। So he brought the samosas to Srila Prabhupada and Tamal Krishna Maharaj came. तो भक्तिचरण महाराज जो समोसा ले गए और उसी क्षण क्या है तमाल कृष्ण महाराज भी आए। Said, Srila Prabhupada, you cannot take this. प्रभुपाद आप ये नहीं ले सकते। You are so sick, you will die if you will take this. आप बीमार हैं, आप क्या है मर सकते हैं। Prabhupada said, go away from here. प्रभुपाद जी ने कहा आप यहाँ से बाहर जाइए। So he took samosas. और उन्होंने क्या समोसा लेना प्रारंभ किया। At least one samosa. एक समोसा। So from that day he started to eat. और उस दिन से उन्होंने खाना प्रारंभ किया। And he recovered soon. और वो बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो गए। So this medicine helped him very much. तो ये इस प्रकार से उनका हेल्थ ठीक होने लगा। And when he started to recover, he said, okay, I will not stay in Vrindavan, I will go preaching. First, for Janmashtami, I will go to London. We will have festivals there. After London, I will go to Gita Nagari in America. And I will establish Varnashrama Dharma there. Then I will go, and he made a big plan. But Krishna had another plan. So when he went to London, he became very sick. And he had to go back to India. So devotees again called for this Kaviraj. But Kaviraj said, are you crazy? You send him to London, now his health is completely destroyed.
कविराज ने बोला कि आप मूर्ख हैं, आपने उनको लंदन भेजा, अब उनका जो स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया है And on this stage, I cannot help him. और अब मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता. So, after that, Srila Prabhupada was preparing to leave the body. उसके बाद प्रभुपाद जी तैयारी कर रहे थे अपने शरीर को छोड़ने की. But still, many devotees were visiting him. लेकिन फिर भी कई भक्त उनको मिल रहे थे. And at that time, His Holiness Gopal Krishna Maharaj, he went to Moscow it was September of 77. उस समय सितंबर 1977 को परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी मॉस्को गए. There was a first international book fair in Moscow. वहाँ पर सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था. And he has brought many Srila Prabhupada's books to Moscow. उन्होंने कई सारे प्रभुपाद जी की कुछ पुस्तकों को मॉस्को ले गए. And he has received a certificate from Russian government. और उनको एक रशियन गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिला. In this certificate, it was said that we thank so much Bhaktivedanta Book Trust for the huge input into the peace in the world. जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि ये जो प्रभुपाद जी की दिव्य पुस्तक है वो क्या है, पूरे संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. So after this international book fair was finished, he came immediately to Vrindavan. और जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वितरण उत्सव था, जैसे ही खत्म हो वृंदावन में आ गए. And Srila Prabhupada was so happy to see this certificate from Russian government. प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे उस सर्टिफिकेट को देखकर जो रशियन गवर्नमेंट से था. And anyone who was visiting him in October and November, he was showing them this certificate. जो भी उनसे मिलने आता था अक्टूबर या नवंबर में, वो उनको प्रसन्नता से उस सर्टिफिकेट को. You see, Russian government has accepted our books. देखिए रशियन गवर्नमेंट हमारी पुस्तकों को स्वीकार कर लिया है. He was so happy. वो बहुत प्रसन्न थे. And at that time, first book in Russian language was printed by Gopal Krishna Maharaj. उस समय पहली बार एक बुक क्या है रशियन लैंग्वेज में प्रिंट की गई. And he has brought this book to Srila Prabhupada. और उन्होंने ये पुस्तक प्रभुपाद जी को दिखाया. Srila Prabhupada said, "How you will distribute this book?" प्रभुपाद जी ने पूछा, आप कैसे इस पुस्तक का वितरण करेंगे? He said, "I don't know." उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता. So why you printed it? If you don't know how to distribute it. आपको नहीं पता कैसे वितरण करना है. But first book was printed. पहला किताब प्रिंट हुआ था. So Srila Prabhupada was staying in Vrindavan on his last stage. तो प्रभुपाद जी अपने लास्ट समय में, अंतिम समय में वृंदावन में रह रहे थे. But when he went to London, लेकिन जब वो लंदन गए, he invited all book distributors to meet him. उन्होंने सभी ग्रंथ वितरकों को बुलाया अपने से मिलने के लिए. And they were thinking he will glorify them. उन्हें लगा कि प्रभुपाद उनका गुणगान करेंगे. So they have read a report on book distribution. उन्होंने ग्रंथ वितरण का रिपोर्ट पढ़ा. And Srila Prabhupada was very happy. और प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे. And he asked, "Are you reading my books?" प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या आप मेरी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं? So they said, "Yes, Srila Prabhupada, yes, we are reading your books." उन्होंने कहा, हाँ हम आपकी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं. So Srila Prabhupada said, "I have a question for you. मेरे पास आपके लिए प्रश्न है. If you are reading my books, अगर आप मेरी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, so what is the essence of the teachings in these books?" तो सार क्या है इन पुस्तकों के शिक्षाओं का? So different devotees started to quote different shlokas. अलग-अलग बहुत अलग-अलग प्रकार के श्लोकों को बताने लगे. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. Shri Radha Vallabha ki jai, Shri Gaurnitai ki jai. So devotees were quoting different shlokas from the Gita. तो भक्त अलग-अलग श्लोकों को क्या उद्धृत कर रहे थे भगवद गीता से. And Srila Prabhupada was not satisfied. प्रभुपाद जी संतुष्ट नहीं थे. He said the essence of all teachings is that we are हम भगवान के क्या है, छोटा अंश है, शाश्वत अंश है. and our eternal duty to serve him. हमारा शाश्वत कार्य है भगवान की सेवा करना. And also he met Ganashyam Prabhu, Bhakti Maharaj. और वो प्रभुपाद जी भक्ति तीर्थ महाराज जिनका नाम घनश्याम था, उनसे भी मिले.
He brought his report on preaching in East Europe. वो अपनी रिपोर्ट लेके आए थे जो ईस्ट यूरोप में प्रचार कर रहे थे. And Srila Prabhupada was so happy. प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे. He said, because of your efforts, उन्होंने कहा कि आपके परिश्रम से your life has become successful. आपका जीवन सफल हो गया है. It was in 1977, Srila Prabhupada said to him, now your life has become successful. 1977 में प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आपका जीवन सफल है. But next day, Bhakti Maharaj became a little proud. लेकिन अगले भक्ति चरण महाराज Bhakti महाराज गर्वित हो गए. And when he came to Srila Prabhupada, जब प्रभुपाद जी के पास गए, Srila Prabhupada did not pay to him any attention. प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं. Like he was not existing at all. जैसे कि वो कहे वहाँ पर हो ही ना. After some time he understood, yes, I'm wrong. कुछ समय बाद उनको समझ लगा कि क्या है, वो समझे कि मैं कुछ भी नहीं. So Srila Prabhupada was teaching everyone that one has to remain very humble. प्रभुपाद जी सभी को सिखा रहे थे कि सभी को क्या विनम्र रहना चाहिए. Even if you achieved some great result, you still have to become very, very humble. चाहे आपने कितना भी बड़ी सफलता क्यों ना पा ली हो, आपको फिर भी विनम्र रहना चाहिए. So there are many pastimes of Srila Prabhupada. बहुत सारी लीला है प्रभुपाद जी की. And this place is itself Srila Prabhupada's Lila Sthan. ये स्थान भी प्रभुपाद जी का लीला स्थल है. Srila Prabhupada was staying here for many years, printing books. प्रभुपाद जी कई समय के लिए यहाँ पर रहे थे और ग्रंथों का प्रकाशन कर रहे थे. This place is still there, yes, where Srila Prabhupada was printing books. महाराज बता रहे कि क्या वो स्थान अभी Okay, भी है? press. Okay, press. But it's closed, yes? लेकिन यहाँ बंद हो चुका है. Muslim hotel. What press is running Radha press? Radha press is running. Oh. That's in Gita. Yes. Transcendental Gita colony, and they were shifted to permanent industry. Radha press is running. So Bhagavatam Katha first canto Prabhu started to first part of the starting of Radha press. Radha press. And 20% first part printed to Radha press. Then after Okay press. Okay press is the closed. Is closed. Radha press is working in they shifted to another place? Yes, Maharaj, yes. So old place is Yes, old place in the market. market. A very big area of 500 years, very big. The Brijwasi, Vrindavanvasi, the owner. The company is there, but place changed. They have got blessings from Srila Prabhupada. महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिला. So it's a very historical place. बहुत ऐतिहासिक स्थान है. These walls, they remember Srila Prabhupada. These deities, they remember Srila Prabhupada. ये सभी स्थान और प्रभुपाद जी जो विग्रह है ये प्रभुपाद की याद दिलाते हैं. So we are fortunate, very fortunate to be here. हम बहुत सौभाग्यशाली यहाँ पर हैं. Maharaj, Gita is also 150 years old. Этим божествам больше 100 лет. From 1958 to 1965, 7 years worship. Я Шрила Прабхупада 7 лет поклонялся им. Okay, if anyone has any questions or suggestions. किसी का कोई प्रश्न या कुछ साझा करना चाहते हैं? What was the result of your temple for this marathon? महाराज पूछ रहे हैं आपका बहुत मैराथन का क्या रिजल्ट रहा? Very well, Maharaj. Your blessings, devotee recorded book 5,000. 5,000. Very nice. No, 5,000, 11,000 plus. 6,000 books going for BBT shop with ground. Neil can preside. 4 to 5,000 would over. So more than 11,000 Bhagavad Gita. Very nice. Very
In all Russia, we distributed 11,000 Bhagavad Gita. But it was 3 times more than last year because of Mr. Narendra Modi giving Bhagavad Gita to Putin. So it was so well advertised by TV that everybody was ordering Bhagavad Gita. Once it was banned and now everyone, even president is gifting. Thank you so much for this wonderful class. And Maharaj, I just want to get blessings and find words that so that we could feel the same enthusiasm like you have. We have seen you for many times that the way you do Kirtan and dance, the way you maintain enthusiasm, how like us devotees, those are very small devotees, those who are just trying to become a small follower of Srila Prabhupada, they could also get the same enthusiasm. So how we can get the enthusiasm of like a sannyasi have, enthusiasm to serve Srila Prabhupada? Yes, enthusiasm is a secret of success in spiritual life. उत्सुकता एक सीक्रेट है आध्यात्मिक जीवन में सफलता के लिए. Utsaham nishchaya dharya tat tat karma pravartana. उत्साह निश्चय धैर्य तत् कर्म प्रवृत्ति. So how we can get enthusiasm? तो किस प्रकार हम उत्सुकता पा सकते हैं? Enthusiasm comes from our chanting japa. आमतौर पे हमारे माला की जाप से आता है. If our chanting is very nice, so we will be so much enthused. अगर हमारा जाप बहुत अच्छा होगा तो हम बहुत अधिक उत्साहित होंगे. So also enthusiasm comes from Srila Prabhupada's books. उत्साह प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से भी आता है. If you are reading regularly, we will be so enthused. अगर आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो आप बहुत उत्साहित रहेंगे. Also enthusiasm comes from devotee association. और उत्साह भक्तों के संग से भी आता है. If we are associating with those devotees who are greatly enthused, we also will become enthused. अगर आप संग प्राप्त कर रहे हैं भक्तों का जो हमेशा उत्साहित रहते तो आप भी उत्साहित रहेंगे. So we have so many sources to get enthusiasm. यहाँ पर बहुत सारे स्रोत हैं उत्साह पाने के लिए. If we will meditate on Srila Prabhupada's life, अगर आप प्रभुपाद के जीवन पर ध्यान केंद्रित करेंगे or his disciples, और उनके शिष्य Srila Prabhupada's disciples, they are a great source of enthusiasm. प्रभुपाद जी के शिष्य एक बहुत बड़ा स्रोत है उत्साह पाने के लिए. Like His Holiness Gopal Krishna Maharaj, जैसे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, he had a great enthusiasm. उनके पास बहुत उत्साह था. Although he was almost 80 years old, he was still coming for Mangal Aarti. हालांकि वो 80 वर्ष के थे लेकिन फिर भी वो मंगल आरती में आते थे. He was doing deity worship. वो भगवान की क्या है आरती भी करते थे. He was preaching. प्रचार भी कर रहे थे. So he was acting like he was 20 years old. वो इस प्रकार से कार्य कर रहे थे जैसे वो 20 वर्ष के हों. So he was his source of great enthusiasm. वो एक स्रोत है बहुत उत्साह का. He was doing more service than young devotees. वो बहुत अधिक सेवा कर रहे थे. जो जवान भक्त हैं उनसे भी अधिक सेवा कर रहे थे. Many people, when they are 80 years old, they are just lying down, जो 80 वर्ष के लोग थे वो क्या है बस सो रहे हैं, taking rest. आराम कर रहे हैं. But he was serving and serving. बट महाराज केवल सेवा और सेवा ही कर रहे थे. He could not stop वो रुक नहीं सकते थे till the last breath, अपने अंतिम सांस तक. even on his last day, हालांकि उनके लास्ट समय भी, लास्ट दिन भी, when he came to Dehradun, जब वो देहरादून गए, he put this cornerstone for the new temple. उन्होंने एक शिलान्यास किया. Then he participated in this
Indian bureau meeting. और उन्होंने इंडियन ब्यूरो की मीटिंग में भी भाग लिया. And next day he had this accident. He fall down in the bathroom. और अगले ही दिन उनका एक्सीडेंट हुआ बाथरूम में. And he has broken his bones. और उनके क्या है जो हड्डियां थी वो टूट गई थी. And he had a very big pain. उन्हें बहुत गहरा दर्द हुआ. And he did not told anyone. और उन्होंने किसी को नहीं बताया. And he was doing puja to his deities like he does not have any pain. और वो अपने So attached to the deity worship that he did not stop it even when he broken his bones. वो अपने विधियों की सेवा से बहुत आसक्त थे कि वो रुके ही नहीं जब उनको बहुत अधिक दर्द हो रहा था. So when we are meditating on the life of such a great souls, we can get so much enthusiasm. जब हम ऐसे महान भक्तों के जीवन में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें बहुत उत्साह मिलता है. Thank you so much. I also have a question. How to maintain regular reading? Because sometimes what happens is that some seva come and then because of those seva, I can't read regularly. And when that stop comes, so it goes on for so long and then I have to pick that habit again. And it takes too long to pick that habit back again. Oh, we can read like one verse when we wake up after bath. First we can read at least one verse and purport. Then we have morning class. We are hearing Bhagavatam. So before doing service we also can read one verse and purport. So we can maintain in any condition, we can maintain our reading habits. Yes. While distributing books, many problems we face. One of them is that sometimes when books are not going, so we feel little demoralized. Something, some negativity comes in our mind that nothing is happening. Although we know that Krishna will do, definitely it will. End of the day, it will be good. But still, we cannot maintain that same tempo, and we feel little down energy, something demoralization, and sometimes it reflects in our words also to the other person. And I face daily, maybe knowingly or unknowingly, 1 or 2% will not be happy at least, whatever may be the reason. Then how to maintain that Maharaj? Yes. So sometimes we are successful, we have big results, sometimes we don't have any result, no books, translator. Can you repeat that Maharaj, please? You can repeat question. इनका प्रश्न था कि sorry. कई बार ग्रंथ वितरण के समय हम क्या है हम इतना मोटिवेटेड नहीं रहते हैं तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ये इनका प्रश्न है. So sometimes we have big results, कभी हमें क्या है बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है, but sometimes no books are going out. कभी क्या है कोई एक भी ग्रंथ नहीं निकलता. But it's also good for us, लेकिन ये भी हमारे लिए अच्छा है, because in any way, if we are participating in book distribution, we are becoming purified. किसी भी तरह यदि हम ग्रंथ वितरण में भाग ले रहे हैं तो हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं. And we can understand that that's not me who distributing books. हम समझ सकते हैं कि हम जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, These books are distributed only by Krishna's grace and grace of his devotees. ये जो ग्रंथ निकल रहे हैं केवल और केवल भगवान की कृपा से ही निकल रहे हैं. That's why sometimes they are not going out. इसीलिए कभी वो निकलते भी नहीं. But if we are in prayer mood, लेकिन अगर हम प्रार्थना के भाव में हैं and we are sincerely praying, Krishna, make me instrument, he can do it. और यदि हम भगवान को बहुत
साधारणतः से प्रार्थना करें तो ये सब हो सकता है. Like in his prayer, Srila Prabhupada is saying, Nachao, Nachao, Nachao Semate, please make me dance, make me dance, make me dance. जैसे प्रभुपाद जी प्रार्थना में बताए कि मुझे नचाइए जैसे आप नचाना चाहते हैं. So, if we are sincerely praying, Krishna can make us his instrument. यदि आप सिंसियर हैं तो भगवान आपको साधन बनाएंगे. And we would see many miracles in front of us. और हम बहुत सारे चमत्कार देखेंगे अपने आगे होते हुए. Persons who would never take a book will take a book. व्यक्ति जो कभी ग्रंथ नहीं लेगा वो भी लेगा. Like sometimes in Russia, some drunkards are buying books. कई बार रशिया में कई शराबी भी क्या है किताब देते हैं. They could not understand what they are having in their hands, but still Krishna inspires them from inside. Take this book, and they are buying books. वो समझ भी नहीं पाते कि क्या है, लेकिन भगवान उनके हृदय के अंदर से उनको उत्साहित करते हैं और उनको ग्रंथ लेने के लिए प्रभावित करते हैं. And sometimes they are becoming devotees. और कभी-कभार वो भक्त भी बन जाते हैं. So many miracles will happen if we will surrender. कई चमत्कार होंगे यदि हम समर्पण हो जाएंगे. So it's very important to learn how to surrender. ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि कैसे समर्पित हो. I have one more question. Okay. Maharaj, in today's world, it's a very fast-running world, and today's the society is also degrading in the terms of character, and we see that in metro, especially in Delhi, so many instances are happening that it's become very it's hampering our practices to become a brahmachari. So how in this city like in Delhi, how we can maintain our this properly brahmacharya so that we could serve Srila Prabhupada with full of enthusiasm? Because one of book I was reading that is also important factor to maintain enthusiasm. So I was just want to know from your response how we can maintain that thing. Yes. प्रभु जी का प्रश्न है कि समाज निरंतर गिरता जा रहा है और लोगों का चरित्र भी क्या है गिरता जा रहा है. तो इस पूरे संसार में ऐसे शहरों में जहाँ पर सब कुछ गिरता जा रहा है, डिग्रेडेड होता जा रहा है, तो उस समाज में कैसे रहकर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें. Yes, it's not so easy to remain brahmachari in Kali Yuga. कलियुग में ब्रह्मचारी रहना इतना आसान नहीं है. Because so many different attractions are there. क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आकर्षण हैं. But if we are properly chanting, लेकिन यदि आप अच्छे से जाप कर रहे हैं, if our mind is concentrated on Srila Prabhupada's books, यदि हमारा मन प्रभुपाद जी के ग्रंथों के प्रति आकर्षित है, फोकस्ड है, even when we are walking on the street, we can repeat some shlokas. यदि हम गलियों में जा भी रहे तब भी हम क्या है श्लोकों का स्मरण कर सकते हैं. Even when we are doing some exercises, we can repeat shlokas. जब हम कोई व्यायाम कर रहे हैं तब भी हम श्लोकों को याद कर सकते हैं. When we are on book distribution, going from one person to another person, we can chant shlokas. जब हम पुस्तक वितरण और एक बड़े व्यक्ति से दूसरे से मिल रहे हैं तो हम उन श्लोकों को ध्यान कर सकते हैं. And when our mind is concentrated on the Shastra, it will be easy. जब हमारा मन शास्त्रों के प्रति आकर्षित या उसी के प्रति ध्यान केंद्रित रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा. So it's very important to learn shlokas. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है श्लोकों को याद करना. It will be easy to concentrate mind. बहुत आसान हो जाएगा अपने माइंड को कंसंट्रेट करना, मन को कंसंट्रेट करना. Like in our brahmacharya ashram, Bhaktivedanta ashram in Moscow, in 1 year they are learning all 700 shlokas from Bhagavad Gita. हमारे गुरुकुल आश्रम में क्या है 700 श्लोक एक साल में याद करते हैं. In 1 year they are learning all 700 shlokas. सारे 700 श्लोक. And they can chant the whole Bhagavad Gita in 3 hours. और पूरी भगवद गीता 3 घंटे में पढ़ सकते हैं. So it's very good for mind. बहुत अच्छा है मन के लिए, दिमाग के लिए. Yes. 25
Hare Krishna Maharaji. Thank you Maharaji for a wonderful lecture. Sometimes it feels like difficult to remain in devotee association, even in temples or centers, bases. How to tolerate devotees, Maharaj? How to tolerate devotees? We see same faces every day. It's difficult. देख रहे हैं कि बहुत कठिन है हर प्रतिदिन. It's like in a family, you see same face every day. जैसे परिवार में आप एक ही शक्ल बार-बार देख रहे हैं. That's why there are many fights in the families. इसीलिए परिवार में अधिक से अधिक लड़ाई होती रहती है. But if we'll understand that they are also part and particles of Krishna, लेकिन यदि हम ये समझे कि वो भी भगवान के ही अंश हैं, it will be very inspirational to see them again and again every day. ये बहुत उत्साहित रहेगा कि हम उनको बार-बार देखते रहेंगे. So by doing spiritual progress, at some point we will understand that everyone is eternal particle of Krishna. आध्यात्मिकता में रहने से हम समझ पाएंगे कि हर कोई क्या है, भगवान का एक छोटा अंश है. So from each person we can get inspiration if we understand that Krishna is there as super soul in his heart. हर व्यक्ति से हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि भगवान के ही अंश हैं. And there will be no question of tolerating. और उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता उनको सहन करने का. Because we will become inspired from each person. क्योंकि हम एक दूसरे से प्रभावित होंगे. So it needs some time to become purified. इसके लिए कुछ समय लगेगा प्योर शुद्ध होने में. That's why Srila Prabhupada went alone इसलिए प्रभुपाद जी अकेले गए. to America, but he was always inspired. अमेरिका के लिए अकेले गए और हमेशा इंस्पायर्ड रहते थे. Because he could see the super soul in everyone's heart. परम आत्मा को हर किसी के हृदय में देखते थे. So it takes time to become purified. इस समय लेता है शुद्धता आने के लिए. At least by Shastra we can understand, yes, he is also eternal particle of the Lord. शास्त्र से जानते हैं कि ये भी क्या है, भगवान के शाश्वत अंश हैं. So we need to hear this again and again. हमें इसे बार-बार सुनना होगा. Then we easily could tolerate the association of other. आसानी से एक दूसरे को सहन कर सकते. Yeah. Could you please share some of the insights of you with the Swami Maharaj? Yes. It's the most wonderful person that I have ever met. बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं जिनको मैं कभी मिला हूँ. I met him first time in May of 1990. और मैं उनसे पहली बार मिला मई 1990 को. So he came to give first initiation. वो पहला दीक्षा लेने आए थे. In 1989 he gave pranama mantra to a few disciples. उन्होंने कुछ शिष्यों को प्रणाम मंत्र दिया 1990 में. And in May 1990 he was performing first initiation. और मई 1990 में उन्होंने पहला दीक्षा परफॉर्म कर दिया. Around 10 disciples were there for initiation. 10 शिष्य वहाँ पर थे उस समय. And every day he was giving classes, morning class and evening class. प्रतिदिन वो एक सुबह और शाम को क्लास देते थे कक्षा में. 1.5 hour class and 1.5 hour answer and questions and answers. 1.5 घंटे का क्लास और 1.5 घंटे के प्रश्न और उत्तर. For 10 years no preachers were coming. Russia, Soviet Union was completely closed for the preachers. 10 साल तक के लिए सोवियत संघ में कोई प्रचार नहीं आया. So every devotee had like 108 questions. तो सभी भक्तों के पास करीब 108 प्रश्न थे. So the questions were not ending at any time. वो प्रश्न खत्म नहीं होते कभी भी. So after maybe 1.5 hours, Guru Maharaj was stopping the questions. He said, okay, we will make a break for lunch. Then after lunch, I will continue. महाराज बोलते थे कि 1.5 घंटे बाद जब प्रश्न होते थे तो कहते थे अभी हम ब्रेक लेंगे और लंच के बाद हम उनको स्टार्ट करेंगे. So after lunch, Guru Maharaj was giving evening class, 1.5 hours, and
1.5 hour questions and answer. लंच के बाद महाराज 1 घंटे का क्लास देते थे और 1 घंटे का प्रश्न उत्तर करते। And it was every day, every इस day. प्रकार प्रतिदिन चलता है। Devotees came from all over Soviet Union because she was like only preacher came at that time. भक्त अलग-अलग स्थानों से आते रशिया से, क्योंकि 10 साल बाद कोई आया था, कोई प्रचारक आया था वहाँ। So everyone also wanted to meet him personally सभी उनसे पर्सनली मिलना चाहते थे because they had so many questions. क्योंकि उनके पास बहुत प्रश्न थे। So after classes he was giving darshans also till midnight. कक्षा के बाद वो आधी रात तक दर्शन देते थे। So first impression was very strong. पहला मीटिंग बहुत स्ट्रांग रहा। At that time she was 46 years old. उस समय वो 46 साल के थे। Very strong, and his kirtan, he was jumping, dancing. So immediately he attracted so many people. And also devotees were arranging his meeting with government. So in every city he would go, he would meet government. And these government officials were so impressed that immediately they were given some building for the devotees. So wherever he went, devotees has received some buildings for. So he was given so strong impression on these people. They were okay. Let's take this building. In one city with the name Vladimir, they were so impressed that the mayor of the city was together with Guru Maharaj on Radha Yatra, opening the Radha Yatra. वहाँ पर एक जो मेयर थे बहुत प्रभावित और जो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो स्टार्टिंग हुआ उन्हीं के द्वारा करवाया गया। For 12 years in a row they had Radha Yatra in this city, and the mayor of the city was coming with Guru Maharaj to open the Radha Yatra every year. 12 साल तक लगातार ये रथ यात्रा चलता रहा और उस शहर का जो मेयर था 12 साल तक प्रति वर्ष महाराज के साथ आता था रथ यात्रा को स्टार्ट करने। And every year when Guru Maharaj was going from Moscow to Vladimir for the Radha Yatra, they were given police car. Police car was going in the front, and he don't have to stop on red light. He was going just immediately to this Radha Yatra. So they were so impressed by Guru Maharaj. He is amazing personality. So I can speak for a few hours about Guru Maharaj. Hare Krishna. He liked very much to distribute books. I have one photo. He is distributing books on Radha Yatra. It was his life and soul book distribution. That's why when he came in 1990, he was so impressed how book distribution is going on. So every year he was spending 6 months in Russia, 1990, 1991, 92, 93, 94. For 6 months he was traveling in Russia. Because very big book distribution was going on at that time. 1991 we became, Moscow Temple became #1 in the world for book distribution. So our
Sankirtan leader made a phone call to Guru Maharaj. संकीर्तन लीडर थे, उन्होंने गुरु महाराज को कॉल किया And he said, our temple became number one, and about me, he said that he was one of the leading book distributors. We want to send him to Mayapur if you will give him initiation. उन्होंने बोला, जो मंदिर के संकीर्तन लीडर थे, उन्होंने गुरु महाराज को फोन किया, उन्होंने बताया, रिपोर्ट दिया और बताया कि जो टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको मायापुर भेजना चाहते हैं इनिशिएशन के लिए, दीक्षा। So Guru Maharaj said, yes, of course, on Gaura Purnima day I will give him. महाराज ने बोला, ठीक है, हम गौर पूर्णिमा के दिन उनको दीक्षा देंगे। So this was my first visit to India. यह मेरा पहला विजिट था इंडिया के लिए, भारत में। We came to Mayapur 3 days before Gaura Purnima. हम 3 दिन पहले आए गौर पूर्णिमा से मायापुर में। And Guru Maharaj was there. गुरु महाराज वहीं थे। And on Gaura Purnima day he was doing full fasting. और गौर पूर्णिमा वाले दिन वो पूरे दिन के लिए व्रत रख रहे थे। And for maybe 8 hours he was chanting japa. और 8 घंटे तक उन्होंने क्या जाप कर रहे थे। And I was inside his room also chanting japa. उनके ही कमरे के अंदर था, मैं भी जाप कर रहा था। And it was very big initiation, like 12 sannyasis, Srila Prabhupada's disciples were on the stage. बहुत बड़ा दीक्षा समारोह था, करीब 12 सन्यासी शिष्य थे प्रभुपाद के स्टेज पर। And each of them, he has a group of candidates. और सभी के क्या है दीक्षार्थियों के ग्रुप थे सबके पास। And they were calling one by one all their candidates. और सभी अपने अपने कैंडिडेट्स को एक-एक कर बुला रहे थे। Then my Guru Maharaj called me. मेरे गुरु महाराज ने मुझे बुलाया। And he started to glorify. He is distributing books. He was so happy with book distribution. So, at that time, Guru Maharaj was staying for Gaura Purnima and taking bath in Ganga. We were taking bath with him, and we were putting Ganga mud on him and washing him, doing abhishek. It was very wonderful time. So, and 1992, Russia became number one for the whole year. At that year, we distributed 2 million books. And Guru Maharaj was so happy. He was GBC for Russia at that time. So, book distribution is his life and soul. If you will participate, we will get so much mercy. Hare Krishna Maharaj, some of your best experiences in book distribution? Best experience. Yes, there was one very special day. We were near North Pole. They have 6 months day and 6 months night. So for 6 months, sun does not rise. It becomes little light, but no sun. And for 6 months, sun does not set. It goes down, then again going up. So very special place. It's very cold in winter and little warm in the summer. And we went there in May.
May is it's already sun is there, but it's still snow and. मई में वहाँ सूर्य तो था लेकिन फिर भी बर्फ थी. So when we went there, Guru Maharaj came to Moscow. जब हम वहाँ गए थे गुरु महाराज मॉस्को में आ गए थे. So we made a con call to Guru Maharaj. हमने गुरु महाराज को फोन किया. And we said that we want to surrender completely. Please give your blessings. We want to distribute thousands of books. हम आपको पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहते हैं और आप क्या हमें आशीर्वाद दीजिए हम बहुत सारी ग्रंथों का वितरण करें. And when Guru Maharaj gave his blessings, very great miracle happened. Everyone started to take books. तब गुरु महाराज ने अपने आशीर्वाद दिया और सभी के बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और सभी हमसे क्या है ग्रंथ लेने लगे. So next day I have distributed something like 400 Maha big books. तो अगले ही दिन मैंने 400 महा पुस्तकों का वितरण किया. And biggest day were after a few days. Biggest day was after a few days. उससे भी अधिक बड़ा दिन उसके कुछ दिनों बाद था. We took 100 sets. हमने 200 सेट लिए. It was 7 Mahabig and 5 small books. जिसमें से 7 बड़ी पुस्तकें थी और छोटी बुक्स थी. So 12 books one set. 12 किताबों का एक सेट था. And these 100 cents they went out before lunch. और ये 100 सेट लंच से पहले ही निकल चुके थे. And after lunch I took 40 sets. और लंच के बाद मैंने 40 सेट लिए. And they also have got वो भी निकल गए. something like 1,500 books in one day. करीब 1500 किताबें एक दिन में निकली. This is the power of blessing of pure devotee. ये शुद्ध भक्त की आशीर्वाद की शक्ति है. Yes. Maharaj, 9 years back, 25th of July 2017, Gargmani Prabhu come here. Here sitting Gargmani Prabhu. There will many questions for book distribution. So Gargmani Prabhu explain that first every devotee important of the Prabhupada books. Okay, this is a value. Then very easily distribute. Yeah. And will explain for Gargmani Prabhu that your head, your lotus, you come, your 100% your success for book distributions. This is the Gargmani Prabhu explains. Yes, thank you very much. And this is a Gauranga Dai, 6-7 years back, Maharaj in hand, Maharaj hand and my hand, Gauranga Dai established here. So Maharaj is checked the Gopal Krishna Maharaj, okay, everything is okay for deity worship. So Maharaj very easily no allowed for deity worship. Or house residence devotee Maharaj first check the perfect, then authorize. Otherwise residence devotee go not easily for deity worship authorize. And Kadam Kanan Maharaj last lecture for Kartik 2-3 years back, I am also attended Maharaj lecture. So same your lecture, your 8:40 your stop. So Kadam Kanan Maharaj, the same lecture Krishna Balam Mandir, more than 7,000-8,000 devotees is present. Or more than 50-70 Prabhupada in the Krishna Balaram Temple Hall. So 8:40 Kadam Kanan Maharaj the lecture stop. Question answer the same you are the question answer. Maharaj 8:58 the stand up talk for Vyasasana. So
8:55 and see 8:55 stand up of the Maharaj, Kadam Kanan Maharaj, and my question ki present time 9:50, 9:30, 10 o'clock lecture. Is that correct? Ki lecture 9 o'clock exact finish? Yeah, 9:50, 9:30, sometime 10 o'clock in the Gauri lecture. It depends on the temple. If situation is allowed. Maharaj only 2 months more the life. So any moment Maharaj left the body, but Maharaj Prabhupada system 100% follow. Yeah. So after 2 months Maharaj will pass away. So Maharaj very well know that my life 1 month. Maharaj very know that I'm my life 1 year 2 months. So Maharaj charged 2-3 hours lecture. Perfectly. So my question ke lecture is at 9 o'clock. Question is finished. Stop the question. Yes, continue. Yes, the question is that lecture has to be stopped at 9 or we can continue. प्रश्न है कि क्या लेक्चर 9 बजे खत्म होना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. In some temples they are strictly following this. कुछ मंदिर इसको बहुत कठोरता से इसका पालन करते हैं. But when Guru Maharaj was preaching in Russia, sometimes his class was ending at 11 o'clock. लेकिन इस समय जब गुरु महाराज प्रचार करते थे उनकी क्लास 11 बजे खत्म होती थी. He was so enthused by preaching that he could not stop. बहुत उत्साहित होते थे प्रचार करने के लिए, रुक भी नहीं पाते थे. So sometimes there are exceptions. कई बार वहाँ पर कुछ Usually we follow the schedule, हमें आमतौर पर जो नियम होता है उसको पालन करना चाहिए. but there are some exceptions. इन कुछ दिनों में कुछ अलग घटनाएं हो सकती हैं. Okay. Even Maharaj, actually I was serving with Guru Maharaj in his media services. So for last few years I was serving with Maharaj, and in Delhi also I have seen that Guru Maharaj, wherever Maharaj was going for lecture, the classes will be going on 2.5 hours. Like I have experienced the most longest lecture in ISKCON Gurugram when it was not inaugurated that time. Lecture was continuously going for 3 hours. And Maharaj was saying, okay, we have to start right now. Maharaj is asking, Maharaj is in flow. Okay, we stop. So I have experience with that because I was traveling with Maharaj for recording his lectures and all. So I have that experience also. It was very difficult to stop him. Okay. Thank you very much. Grandaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, wonderful lecture, Maharaj.